Okay, so let's run this program again. So roll number 1, enter the name Kevin, and group is your group, PEM लिखते हैं, and then screen, oh my god, sorry okay, right, okay, thank you. Okay, the phone number 1 2 3 4 5 6 something we will write. Okay, so again it is being printed. देखो यहाँ पर student details are as follows. Roll number 1 Kevin. Okay, simply by using the structure variable dot that member. Okay, so structure variable, so this is a structure variable. Okay, so the members of structure cannot be accessed directly outside but only through the structure variable. Structure variable how you will declare? Struct student. Okay, this is your data type. जैसा आप याद रखो, यहाँ पर mistake ही नहीं आएगा. This is your variable name, so data type and then variable name. ऐसे ही declare करते हैं ना. Similarly, this is your data type that you have created. That is why structure is a user defined data type. आप खुद का एक data type create करना है तो वो possible है. Okay, इसके इंटीजर में हमने किया 2 बाइट. ओके, अरेज में हम लोग ने किया दैट इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप. ओके, सिर्फ इंटीजर का ही इतने सारे डाटास हमने किया. 2 × 2 × 2 + 2 + 2 + 2. ओके, 20 × 2 40 ऐसा हमने क्रिएट किया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप. बट हियर यू हैव क्रिएटेड योर ओन डेटा टाइप कॉल्ड स्टूडेंट, और उसका साइज भी आपने स्पेसिफाई किया. यू हैव डिसाइडेड इसका साइज क्या होना चाहिए. आई हैव डिसाइडेड नाउ. ओके, बिकॉज आई हैव रिमूव्ड email ID because I thought of I don't want to have the email ID or city name. Okay, so this structure I have defined. So accordingly memory space will also be allocated that in that way. Okay, so using this structure variable dot the members you can access this value. Okay, so let's save this program, copy this program. Okay, always structure program will be very lengthy. Okay, in your practicals also you will see structure programs are 2 pages 3 pages. Okay, but सबसे easy one is structure. Okay, उसमें कुछ लॉजिक ज़्यादा नहीं लगता है. ओके, वेरी सिंपल वन, बट लेंथी क्यों होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स. इफ़ यू हैव मोर मेंबर्स देन मोर डेटा यू हैव टू इंक्लूड. देखो यहाँ तक सिर्फ इनपुट आ गया है, ये पूरा मेरा आउटपुट आ गया है. प्रोसेसिंग कुछ करना तो वो बहुत कम रहेगा. ओके, सो स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बहुत रहेगा, बट उसको कुछ ना, ये देखो पूरा ना इनपुट ही है, बट डिफरेंट वेरिएबल के लिए आपको अलग अलग प्रिंट स्कैन लिखना पड़ेगा. हियर ऑल्सो फॉर एवरी वेरिएबल अलग अलग आप प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई इट विल बी वेरी लेंथी. ओके, लेंथी हो सकता है. अभी सपोज मैंने यहाँ पर नेम रखा है. ओके, नाउ आई वांटेड टू कैलकुलेट द मार्क्स. ओके, मेरे पास 3 मार्क्स मैंने रखा. ओके, मार्क 1, मार्क्स 2, थर्ड सब्जेक्ट का मार्क. ओके, 3 सब्जेक्ट मार्क्स आई एम कीपिंग. Okay, here I am going to keep the average of a student. Okay, average में floating रखने वाले हूँ, float, right? So here what I am doing, 1 roll number and then the name of the students and 3 marks. 3 marks means 2 + 2 + 2. Okay, 6 bytes I have allocated. Here 1 average 4 bytes. So totally how many bytes I am allocating? 20 + 6 20. 26 for 30 32 byte. Now I am allocating for the same student data type. Now I am allocating 22
32 byte, right? Because 26 30 32. ओके, सो यहाँ पर भी आपको आफ्टर रोल नंबर नेम यू हैव टू एंटर द मार्क्स, enter 3 subject marks. That can be any subject, you can specify English, maths, electronics, anything you can specify, but generalized में मैंने M1 M2 M3 लिख दिया. Okay, percentage D, percentage D, percentage D. Alright, so here also I will be using ampersand M1 comma ampersand M2 comma ampersand M3, 3 variables, and then average I don't need to input, and average I am going to calculate, right? So what I will do, I have to how to find out the average. I want 3 subject must be M1 M2 M3. I cannot directly access because it is a member of the structure. Okay, always remember, right? Now I wanted to add these values, s dot M1 plus s dot M2 plus s dot M3. okay, तीनों मैंने ऐड किया. ओके, तो ऐड करके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है. वी नो दैट ब्रैकेट्स आपको डालना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 3. सो के डिवाइडेड बाई 3 करके उसको कहाँ पर स्टोर करना है, AVG में. AVG is equals to, right? AVG belongs to structure. okay, it is not a normal variable. normal variable में store कर सकते हैं, but I wanted to store it in a particular student's average. okay, so yes dot डाल दूंगी, that's it. okay, roll number, name and then average. सिर्फ average मैं यहाँ पे print करूँगी. average is percentage F यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर ये भी. okay, so now I can input roll number, same हम लोग रखते हैं. okay, अरुण, 3 subject marks may be 67 89 or 76. okay, तो see here you can calculate the value. so एक student मैंने create किया, तो मैंने एक data type create कर लिया where I am going to store all the roll number, name, marks and then average. okay, ये एक student का हो गया है. ये आपको समझ में आया, समझ में आया क्या ये प्रोग्राम? Are you able to follow this? Yes ma'am. yes. पूरा मैं रिमूव कर लेती हूँ. now this is for a single now finding out the average of a student, finding average of a student, average mark of a student using structure. so structure is a user defined data type, right? इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे. तो ना try to submit all the assignments. if you submit the assignment then only you will get a certificate. attendance be for all the days. okay, all right. okay, so here we are using this structure for only one student. you may ask, एक स्टूडेंट के लिए मैंने ऐसा लिख दिया. ओके, अभी सपोज आई एम हैविंग 20 स्टूडेंट इन माय क्लास. am I going to do this for this repeat these statements for 20 times? this is for one student, right?
Okay, for another student also same, another student also same. So 20 students means 20 times am I going to copy paste the statements? Okay, that is not an efficient one, right? So instead what we can do, see, मुझे पता है ये पूरा स्टूडेंट का एक ही डिटेल्स फॉर ऑल द स्टूडेंट आई वांटेड टू कैरी द सेम डिटेल्स, आई वांटेड टू डू दिस प्रोसेसिंग. Okay, so instead of copy pasting all the things, what I'm going to do, I'm going to create an array. So do you have 20 students? 20 यहाँ डाल देंगे. Okay, so 20 डालेंगे तो 20 डिटेल्स मुझे डालना पड़ेगा. So मैंने 2 डाल दिया है. So only 2 students I'm having. Okay, so what I will do, same coding I am going to keep, but array of structures I have created. Okay, array of structure variable. Okay, so here I can have, see, any number of size you can give, 10, 20, 30, 100. आपका प्रोग्राम का साइज बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा. But instead what you will do, when you will access the value, there you have to specify whether this is student index number 0. Okay, so since array of structure मैंने create किया है, okay, maximum उसका 2 हो रहा है, तो एक स्टूडेंट का जीरोथ रोल नंबर मीन्स जीरोथ इंडेक्स में फर्स्ट स्टूडेंट्स रोल नंबर आई विल कीप, and index number 1 I will store the second student's roll number, name, and then marks and average. Okay, like that I can to, if I change this index value, it is going to change the student also. Okay, so for what I am going to do, this particular part I have to change. Okay, I need to introduce this index value in a structured variable. So structured variable के लिए मैं एक for loop simply create करूँगी where index value I represents the index value. I is less than 2, 0 and 1. Okay, I plus plus. That's it. Very simple. Okay, inside this also, instead of giving the constant value, I am going to provide I. Okay, S of 0 means first student, S of 1 means second student, S of 2 means third student. So everywhere you have to introduce this index value now. So in this way, for the entire class I can have so everywhere you should not forget which student you are specifying. Only this I will define which student you are specifying. Here also देखो simply मैंने डाल दिया. So first of all I am going to take the roll number of first student because my I value was 0. फिर first student name, first student marks, first student average I have stored it. फिर again I will increase the value of I, second student roll number, name, subjects and then average. Okay, like that for all the students. Simple है. Okay, so if I put 20 means maximum 20 students का details मैं यहाँ पर store कर रही हूँ. The entire class details I can store this with the same coding, only I have included the for loop. So here also when you are displaying the value, that time also you can use the same for loop. Okay, students details, first student detail. Okay, कौन सा student है वो हम लोग लिख लेते हैं. Student detail of okay of number 1. Okay, percentage d डाल दो और यहाँ पर आपको I डाल दो, I plus 1. Okay, student detail of 1. Okay, first वो लिख नहीं पाएंगे, so 1 2 3 4 आपको पता चलेगा.
स्टूडेंट नंबर 1, ओके, उसका रोल नंबर, नेम एंड एवरेज, ओके. लेट्स सी, यहाँ पर आपको here also you have to include the index value. That means 0th index means first student, index 1 means second student, like that. Okay, if you run the program, I have not declared na, so I'll declare I. Let's see, रोल नंबर 1, ओके. फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम अरुण मैंने रखा, और 3 सब्जेक्ट मार्क्स 89, 67 एंड 85. ओके, उसका एवरेज कैलकुलेट हो चुका है. ओके, एवरेज कैलकुलेट यहाँ पर हो चुका है. ओके, सेकेंड लूप में हम लोग जा रहे हैं. अगेन आई एम आस्किंग, दिस इज फॉर द इंडेक्स वैल्यू 1. ओके, रोल नंबर मैं अभी 2 दूंगी. ओके, यहाँ पर बालू नेम डाल देती हूँ. 3 सब्जेक्ट नेम 56, 45 एंड 36. ओके, यहाँ पे सी आई हैव एंटर द वैल्यूज़. यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का डिटेल्स भी आ रहा है. ओके, स्टूडेंट नंबर 1 का रोल नंबर 1 अरुण एंड 80% मार्क. स्टूडेंट नंबर 2 रोल नंबर 2 and then name and then 45% mark. Okay, so like that you can create your own data type, and in which you can define whose detail you wanted to store, and what are the detail and what are the data type, what will be the size of an array, everything you can define. That is why the array is, this structure is a user defined data type. Okay, array of structure you can create. Is that clear for all of you? See, employee, for employee also you can create your own data type. Employees का क्या क्या details रखना है, that you will decide. Okay, here I have decided now I am going to keep only the roll number, name, marks and average. Okay, similarly you can create employee table or teachers table, and then you can decide what are the details I wanted to store under teachers. वो हम लोग कर सकते हैं. ओके, सो अरे ऑफ वैल्यू, सी स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने अरे यूज़ किया है, एंड देन दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल में भी हम लोग ने अरे यूज़ किया. बोथ आर पॉसिबल. इज दैट ओके? इज दैट ओके? So structure means it is a user defined data type. Okay, I'll remove this. Only one concept is left. Structure union. Okay, union is another user defined data type. Okay, this is also in your syllabus. Union is another user defined data type, but there is, okay, everything is same. Okay, everything is same. Okay, sorry, instead of structure you have to use union. Sorry, student, everything is similar. Instead of struct you will be using union, but structure union में बहुत फर्क है. Okay, declaration में you will not find any difference, but when you will implement this union and structure, there is a drastic difference between these two. Okay, but both are user defined data type only. Okay, see, in structure at a time you can declare many things. Okay, you can declare many members inside union, but at a time you can use only one member. Okay, only one member of union can be active. Okay, so here as I said, structure में 2 byte will be allocated for roll number, 20 byte for name, and then 6 bytes for marks and 4 byte for average. But in union it will count first member requires 2 byte, second member requires 20 byte, third member requires 6 byte, and fourth member requires require 4 byte. So it is going to choose a maximum byte that is required by a
member. Maximum byte क्या है? 20 is the maximum byte. So this will allocate 20 byte for your student. Okay, whereas in structure we have allocated 32 byte, but in union I said only one member can be stored at a time. Okay, even though you are declaring all these variables, but when you practically implement, it will allocate only one member. You can use only one member. So when you are declaring a union, it will identify the what is the memory requirement for all the variables, and it will choose the memory which is required by a member which needs a maximum size. Okay, so 20 is a maximum size. For this union 20 byte will be allocated. ये 20 byte यहाँ पर allocate होगा. That's it. ओके, ये 20 बाइट के अंदर आप स्टोर करो, रोल नंबर चलेगा. रोल नंबर आपको स्टोर करना है तो स्टोर करो, या तो फिर नेम स्टोर करना है तो सेव करो. ओवरराइट होते ही जाएगा. आप रोल नंबर सेव कर रहे हैं तो रोल नंबर वहाँ पर सेव होगा, बट नेम सेव करेंगे तो नेम रोल नंबर के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा. ओके, फिर M1 डालेंगे तो वो भी ओवरराइट हो जाएगी. एनी वन वेरिएबल कैन बी एक्टिव. Okay, so let's do this program. Union student. Here I will use the variable u. Okay, so इसको copy कर लेती हूँ so that बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ M1 M2 M3 मैं एक ही मार्क्स रखने वाली हूँ. आई विल रिमूव दिस एवरेज ऑल्सो. ओके, एवरेज भी मैं रिमूव कर लेती हूँ. 1 मार्क, एंटर द मार्क. See, 1 M में रखती हूँ. M here also M, right? So let's run this program. Simple. मैं क्या कर रही हूँ? I'm just inputting the value for the roll number, name and marks. Okay, 3 variables I'm having. Run the program. Scanf का क्या है? Roll number should be, what is the problem? Ampersand yes dot roll number. Okay, this is a variable is u na here. See, the union variable is u. Okay, so here I am using yes na, that is why a problem. Okay, yes, now roll number कोई problem नहीं होगा. Same roll number, और यहाँ पर आप केविन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. एंटर द मार्क्स. मार्क्स 89. ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा. बट इफ़ यू प्रिंट द वैल्यू, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे. ओके, स्टूडेंट डिटेल्स, just will change the variable name u. Here also u. Instead of average I will be printing m, and this is also an integer type of a value, right? Let's run the program. Roll number 1, okay, Kevin, and then marks was 89. See, यहाँ पे क्या आ रहा है? रोल नंबर 1, name is Kevin and marks was 89, but here what it is being printed, roll number is 89, name कुछ भी नहीं आ रहा है because that is a string value. okay, since roll number भी integer है, average भी integer है, तो आपको ये value बराबर आ रहा है. okay, नेम यहाँ पर y करके आ रहा है,
because nothing is stored in that, and this is 18. The reason is, first of all, you have stored 20 byte is allocated na. I said 20 byte is allocated. Okay, so in that 20 byte 1 was stored. So as soon as you entered Kevin, this was over, we have overwritten this value, Kevin value, upon this. Okay, third you gave 89 and it was overwritten on this. Okay, at last what value you have in that union? Everything is 89, 89, 89. Since we are printing this character value है ना, यहाँ पर परसेंटेज yes प्रिंट कर रहे हैं, that is why y आपको प्रिंट हो रहा है. ओके, उसका ASCII वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट हो रहा है. ओके, सो वन वैल्यू एट अ टाइम यू कैन यूज, बट यहाँ पर ये रोल नंबर को आफ्टर एंटरिंग यू प्रिंट द वैल्यू बराबर आएगा. ओके, नेम ऑल्सो प्रिंट, यू विल गेट एवरीथिंग. एवरेज नहीं होना चाहिए ना, मार्कस. ओके, everything will come now. Okay, the roll number 1, see roll number 1 आ तो रहा है. okay, name मैंने Kevin रखा, so this will also come because we are overwriting on y. okay, marks 89, this is also coming, but immediately it is coming. okay, but every time you are inputting one value, the previous value is overwritten by the new value. okay, so that is why initially जब आपने input किया तो immediately the value is coming. see, उसमें कुछ issue नहीं है, but after you have inputted again, if you are checking those value, 89 ही आ रहा है, because 89 was the last value that was stored. इसी को आप लोग ऐसा करो, enter the name को आप बाद में करो, नेम को आप बाद में कर दो. अभी now you run the program. roll number 1, okay, name is Kevin. ये देखो कुछ भी वैल्यू आ रहा है. रीज़न क्या है? केविन लास्ट वैल्यू. ओके, लास्ट कौन सा वैल्यू यहाँ पर आपको रिटर्न हो रहा है? एक स्ट्रिंग वैल्यू. ओके, वो स्ट्रिंग वैल्यू को आपने कहा KEVIN का ASCII वैल्यू वहाँ पर स्टोर्ड है. दैट इज़ वाई इफ़ यू आर प्रिंटिंग दोज ASCII वैल्यूज आर बीइंग प्रिंटेड. यहाँ पर देखो KEVIN का जब ASCII वैल्यूज रहेगा ना, दैट इज बीइंग प्रिंटेड ओवर हियर. ओके, नेम प्रिंट करते हैं तो केविन आ रहा है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन. सो यूनियन में ओनली वन डेटा कैन बी स्टोर्ड एट अ टाइम. इज दैट क्लियर? Is that clear for all of you? Because the structure and union both are there in your theory and practical. This can be your viva question also. Right? Any doubts you are having? Any doubt? If not, then we will continue tomorrow. Tomorrow we will see some of the string functions, and then we will conclude it. You will get an MCQ test. टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा. So before I think 14th you have to submit your assignments. Okay, पूरा assignments आपको complete करना है. Attendance fill कर दो. And then MCQ टेस्ट रहेगा तो वो भी आपको अपीयर करना है. Okay, then you will get a course completion certificate, right? So tomorrow we will continue.